Hello, everyone, and a very, very good evening. Sorry, we couldn't do the session yesterday because of some tech issues, but here we are, and I assume and I hope that everything is going fantastically normal and fantastically well, and so on. um, a particular news item that has been dominating over the past few days is certainly the Prime Minister's visit to Punjab, not because of a controversial statement that has been made as part of the election rally and so on, but rather because of a security glitch which led to a situation where the Prime Minister actually could not attend the rally at the end of the day. And we are reading about the various reports about how the police services are responsible and how the SPG is responsible. And among other things, I'm sure all of you have also read about the important development that the SPG Act is probably going to be invoked, right, for the purpose of initiating disciplinary proceedings and other legal consequences that Punjab police and the responsible personnel, uh, might have to face. Uh, One of the provisions under the SPG Act itself categorically points out, if you look at section 13 and 14 and so on of the SPG Act, which came out quite a few years ago in 1988, but one of the provisions, for example, specifically deals with the idea that every security agency every security agency in India, whether it is not just security agencies, in fact, I would like to other agencies as well, whether it is the state government or other agencies, the central government, everybody has to assist the SPG in doing their job, particularly if there is a particular issue that is happening, like the Prime Minister's travel log is, of course, a matter of national security, for the central government in terms of priority and so on as well. So, is there a violation that has happened? Is there a complexity or a complication that has actually happened? We will be taking a very intricate and a very quick look at the special protectee group and what are the specific powers, what are the duties, how are the members of the SPG actually appointed as far as the security part of it is concerned, who all form part of the protectees, right? Is it only the Prime Minister? Is it Prime Minister's immediate family? uh, is it former prime ministers also? President of India का तो चलो presidential guard अलग से होते हैं, तो we need to probably see all of those things. So वही आज का हमारा चर्चा का विषय है today. That is what we are going to be discussing, right? The special protectee group. Narendra Damodar Das Modi, the Prime Minister of India, visits Punjab and is unable to come back. My name is Debajyoti Das, and I'm an alumni of HNLU. I've also secured an All India rank 20 in the NLS Bangalore entrance. I've been a Microsoft intellectual property research scholar, and after graduation, I was also working with one of the topmost law firms in India called Amarchand Mangaldas, particularly specializing in their capital markets team. All of you can join me right here on Telegram. This is the name of the group, and I also assume that the link is provided to you in the description, right? In the description as well. I would also invite you to join me on Unacademy in terms of the community that we have. I am going to initiate communications there as well. There are various unique features of the Plus platform, and now that we have launched the CLAT iconic program as well, a flagship program for CLAT aspirants. What are the unique features? Of course, you can use the code DAVE10 for the variety of subscriptions that we have, whether it is 24 months, 1 month even,
राइट, एंड यूल गेट योर एडिशनल 10% डिस्काउंट. और आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज डू रिमेंबर टू यूज माय कोड. मुझे भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आती रहेगी कि आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे सेशंस को भी पसंद कर रहे हैं. आई डू वांट टू आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पॉइंट आउट कि अब आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, राइट, एंड यू कैन यूज द सेम कोड dev10 to get your iconic subscription as well. अच्छा, इतनी बार मैंने iconic बता दिया, but iconic के special features क्या हैं? iconic में we have one-on-one live mentorship, right? Individual faculty members के साथ आप mentorship का आपको opportunity मिलेगा, live doubt solving, raise a hand, which is an option in all the plus classes, but priority आपको पहले दी जाएगी as far as the iconic feature is concerned. राइट, there's a live mentoring platform जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ, राइट, सो इफ यू वांट to specifically spend some time in terms of studying with me as an individual, आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, राइट. मेंटर सेशंस will be 10 to 15 minutes each. If you take the 3-month subscription, you'll have 18 sessions. 6-month subscription is 36 sessions. 1-year subscription is 72 individual sessions, and the 24-month subscription gives you 144 individual sessions. This is all in addition to the plus features that are going to continue to be available to you, right? So live doubt solving, priority in live classes, and the live mentorship program is the main difference between the plus and the iconic program. The championship test is happening on Sunday. I hope everybody is already geared up. हर संडे की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ interesting prizes also we are bringing for you. We have the Amazon voucher worth ₹5,000. We have for the first prize, second prize is Amazon vouchers worth 2,000, and the third prize, 3,000, and the third prize is worth 2,000 rupees, right? So कुछ अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग खरीदने का प्लान है तो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए, इस मॉक में अच्छा रिजल्ट लाइए, and you will be able to buy whatever it is you're looking to buy. We are starting off with the rank booster batch, which is the 3-month batch course for CLAT 2022 aspirants. And एक भला इंसान जिसका फोटो आपको यहाँ दिख रहा है, I will also be taking classes for you guys in this particular batch. So do enroll. अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, please make sure you're joining me on that platform. The ultimate batch for Maharashtra CET is the 6-month batch, which is starting on the 12th of January. We also have the Law and Order batch, which has just started very, very recently on the 5th of January. We are continuing to have the ULAT examination, which happens every alternate Sundays at 11 a.m. in the morning. And we also have the weekly T20 test, जिसमें Monday को आपका English होता है, Tuesday को Mathematics or Quantitative Techniques, Wednesday is Logical Reasoning, Thursday is Legal Aptitude, and Friday is Current Affairs and GK. And this is open for everyone, right? तो आप में से कोई जो हमें सिर्फ YouTube पे ज्वाइन किए हैं and you're not on the Plus platform or on the Iconic subscription, आप लोग भी ये टेस्ट का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं, right? We have a very interesting movie screening for you, right? All of you have seen this very, very famous actor Jamie Foxx, this movie called Just Mercy, which is premiering on the 15th of January exclusively for all of you. And we also have Wednesday Mania, which is happening on the 13th of January, जिसमें legal reasoning के आपके quiz as well as questions and answers and solutions, which will be taken by Kriti Bhatnagar, right, who's also from a national law university. So do join us for each of these things. The live quiz feature also continues to be active. And with that, let us come to what happened in Punjab, where it happened in Punjab, what's the story. And very quickly, on the 5th of January, Prime Minister Modi's convoy was stranded for 20 minutes on a flyover due to a blockade by protesters near Firozpur, which is in Punjab, following which he had to return from the pole-bound state without attending the rally, and he had to go back to Bhatinda, right? वहाँ पर ही एयरपोर्ट, जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट था, वहीं पर ही उनकी फ्लाइट लैंड भी की थी आते वक्त, और वापस वहीं से उन्हें जाना पड़ा. Post this incident, the center has constituted a 3-member committee. Please remember, this is very, very important. The center has constituted a 3-member committee to probe,
right, to investigate the alleged security breach and has so far summoned various important police officials, जिसमें से पंजाब पुलिस चीफ, दैट इज कौन पुलिस चीफ होता है, दैट इज द डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हमारे एस चट्टोपाध्याय जी हैं, एंड 13 other senior officials have also been called for questioning so that they can explain what is happening, what is not happening. The center meaning the central government is likely, okay, अभी तक यूज किया नहीं है, राइट, बट न्यूज़पेपर में बहुत सारी चर्चा चल रही है, तो हमें पीछे नहीं छूटना है, राइट. क्लैट की एग्जाम की तैयारी चल रही है हमारी, 5 months to go for CLAT 2022 and about 11.5 months to go for CLAT 2023 examination. तो हमें पीछे नहीं छूटना है. The center is likely to use the SPG Act against Punjab police officers. तो कैसे यूज करेंगे, क्या नहीं यूज कर सकते, क्या है ये SPG Act, SPG जो आप बार बार सुनते रहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट. The Special Protection Group Act provides proximate security to the Prime Minister of India, former Prime Ministers of India, and members of their immediate families, right? Immediate families को भी SPG Act में ही protection provide किया जाता है. The SPG Act came into force on the 2nd of June 1988, and जैसा कि आप लोग सब शायद जानते भी होंगे, the SPG Act was passed by the Parliament post the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi and was extended to all former Prime Ministers and their immediate families after former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. तो पहले क्या था, आया तो था assassination of इंदिरा जी के assassination के बाद ही आया था, right, but जब राजीव जी का भी assassination हो गया है, right, we saw and Rajiv Gandhi when he died, right, or I mean was assassinated rather, राजीव जी, अगर आपको ना पता हो तो राजीव जी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, राइट. इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स डाइड इन ऑफिस, शी डाइड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राजीव जी का टेन्योर खत्म हो गया था एंड ही वाज नॉट री इलेक्टेड इन द 1989 इलेक्शन, राइट. 1989 वाले इलेक्शन में वो वापस ऑफिस नहीं आ पाए थे, बट यू नो इट कंटिन्यूज टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट कंटिन्यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है तो उनके भी एक बहुत सीरियस लाइफ थ्रेट का सिचुएशन हो सकता है और रह सकता है. ये हमने राजीव गांधी के डेथ में जाके फाइनली एक सीरियस रियलाइजेशन हुआ. तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और उनके परिवार को भी एसपीजी का प्रोटेक्शन देना चाहिए और उनको ये एक्सटेंड किया गया ओनली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन एंड व्हाट आर द ड्यूटीज. SPG में अगर आपको ज्वाइन करना है, any member of any other armed force of the union, right, may be appointed to the SPG by the center either by general or a special order. The provisions of this act will be applicable to the person that has been appointed. Each member of the special protection group is liable to serve in any part of the world, कहीं भी जाना हो whole world में, because Prime Minister of India will keep traveling, right. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए, हो सकता है कहीं भी किसी भी देश जाना पड़ा, तो होल वर्ल्ड में जहां पर भी आपकी ड्यूटी का डिमांड होगा आप उसी पार्ट में वहीं पर ही सर्विस प्रोवाइड करना एसेंशियल है, राइट. एंड यू आर सब्जेक्ट टू द एसपीजी एक्ट वेयर एवर यू माइट बी. सो इवन इफ प्राइम मिनिस्टर इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स और ही इज इन इराक और ईरान और वेरेवर, राइट, आप पीएम की सिक्योरिटी में ही हैं एंड आप एसपीजी एक्ट में ही गवर्न किए जाएंगे, राइट. ए मेंबर ऑफ एसपीजी कैन बी एट एनी टाइम बी एम्प्लॉयड और डिप्लॉयड इन एनी मैनर विच इज कंसिस्टेंट विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप अंडर दिस एक्ट. सो सब कुछ डिपेंड करता है कि जिनका प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना है, जिनको ये एसपीजी का स्टेटस दिया हुआ है कि आप स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्रुप में हैं, राइट, तो आप सबके प्रोटेक्शन के लिए जहां पर भी ड्यूटी होगी वहां आपको जाना पड़ेगा. Now this is the very important change that had happened. You know, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्योरली पॉलिटिकल, बट ऑब्वियसली उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी का कैसे प्रोटेक्शन हम हटा रहे हैं. लिटरली राहुल गांधीज father has been assassinated in India. His grandmother, right, has also been assassinated in India. Grandmother was the sitting Prime Minister of India. His father was also former Prime Minister.
एंड दोनों का एक्चुअली असैसिनेशन ही हुआ है, एंड दैट्स हाउ दे डाइड, राइट? सो डू वी कंटिन्यू फॉर एवर कि क्या हम कैसे इवेलुएट करें? द एसपीजी एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019 to reduce SPG cover to only the Prime Minister and members of his immediate family residing with him, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रहे हैं, राइट? ऑफिशियल रेसिडेंस में, ऑफिशियल रेसिडेंस क्या है? हम लोग सब पहले सुनते थे 7 RCR, राइट? 7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली, पहले ये होता था, अब इसको हमने चेंज कर दिया है लोक कल्याण मार्ग, राइट? What is the official residence of the Prime Minister? It is not Race Course Road. अब उस रोड का नाम, कई सारे नाम तो चेंज किए गए, आप लोग सब न्यूज़ में देखते ही होंगे. इलाहाबाद इज नाउ प्रयागराज, फैजाबाद इज नाउ अयोध्या, यू नो, बहुत सारे नाम चेंज किए गए. एक रोड का नाम दिल्ली में भी चेंज हुआ है, बहुत सारे चेंज हुए इनफैक्ट दिल्ली में भी, बट इट इज लोक कल्याण मार्ग विच इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. पहले जो रेस कोर्स रोड होता था वो अब लोक कल्याण मार्ग है. सो एसपीजी एक्ट को अमेंड करके सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए और जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स वहीं पर रह रहे हैं ऑफिशियल रेसिडेंस में, उनको ये एसपीजी का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, राइट? श्रद्धा, इज इट जस्ट स्टार्टेड सर? नॉट रियली श्रद्धा, थोड़ी देर हो गई है, बट you can always watch the initial part of it जब हमारा सेशन खत्म हो जाए. नहीं, 2019 amendment further reduced the time period of SPG cover to the former prime ministers and their immediate family to 5 years after they leave office, right? तो former prime ministers के परिवार के लिए, former prime ministers के लिए, right, indefinite time frame तक SPG का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, राइट? पहले था एक्सटेंड करते करते. सो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग सब इमीडिएट फैमिली ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हैं बाय डेफिनेशन, बिकॉज राजीव गांधी वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड राहुल गांधी इज द सन, प्रियंका गांधी इज द डॉटर, एंड सोनिया जी इज द वाइफ ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. तो कितने साल के लिए फॉर्मर पीएम की फैमिली को दिया जाएगा, राइट? सिर्फ 5 साल के लिए मैक्सिमम दिया जा सकता है अगर उनका ऑफिस छोड़ चुके हैं तो. सो 1989 में राजीव गांधी हैड ऑलरेडी लेफ्ट ऑफिस, राइट? सो ऑब्वियसली अब राहुल, सोनिया एंड प्रियंका जी का जो एसपीजी कवर था, दैट हैज बीन मॉडिफाइड, एंड नाउ ऑफ कोर्स राहुल गांधी फॉर एग्जांपल हैज जेड कैटेगरी विद ASL, right? At ALS, sorry, advanced licensing system and so on. So anyway, provided that the immediate family members resided at the allotted residence with the former prime minister, तो वो भी तब जब साथ में रह रहे हो और ये सब, तो obviously that's not applicable, and therefore SPG is no longer applicable as well, right? Okay, so that's essentially a quick discussion on the special protection group that I wanted to have with you guys. Of course, अगर कोई इंपॉर्टेंट चेंज आएगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा. इनफैक्ट यू नो, आई वुड वांट टू पॉइंट आउट, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी फॉर नरसिम्हा राव, राइट? व्हेन नरसिम्हा राव, सॉरी RAS कर दिया मैंने, व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, राइट? दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, एंड सो द SPG हैड एक्चुअली प्लेस्ड अ रिक्वेस्ट कि हमें 30,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इस टाइप का एक पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को पूरी सिक्योरिटी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना प्रोटोकॉल में संभव नहीं होगा. सो कैन वी शिफ्ट द वेन्यू कहीं और, अगर राव साहब का हियरिंग हो पाए, प्रेजेंटेशन हो पाए और ये सब, देन इट वुड प्रोबेबली मेक अ लिटिल मोर सेंस. एंड most of you may not know this, but actually the court agreed, right? और जुडिशियल हियरिंग के लिए भी हमने वेन्यू और ये सब चेंज करने की जब जरूरत पड़ी थी, तो you know, हमने किया भी था. So the SPG and the security measures that are required to be taken for the special protectees like the Prime Minister of India and so on is of course a very, very important part of our understanding of how things and how security measures, particularly because we've had 2 prime ministers जिनका assassination हुआ भी है and so on. So if you guys have any questions, of course please do let me know. In the meanwhile, हम special classes और plus classes में Unacademy के अपने platform पे
इन सारे विषय पे चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। पर्टिकुलरली अगर केंद्र सरकार ने, पर्टिकुलरली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब पुलिस के अगेंस्ट स्पेशल कोई एसपीजी एक्ट के अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या कोई भी एक्शन अगर लीगली इनिशिएट किया, I promise you I will bring you an update on that as soon as possible. In the meanwhile, please stay tuned. Please do remember to subscribe and hit the bell icon so that you're not missing out on any of the notifications. Thank you very, very much. Have a lovely, lovely evening ahead of you, everyone. Have a wonderful night, and I will see you guys tomorrow very soon. Thank you very much.